Very good morning, student. So, hope you all are fine. So, today we are going to do our poem Dog Lovers. So, by reading the heading or by reading this chapter name or the poem name, you got something about dog. As we read the heading, we get something in our mind. Dog has furry, they have not furry, they have long ears, they have four legs like that. Okay, and they have a very soft skin. Yes, when we touch dog, we get a very soft, they have a very soft skin. Okay, a dog is also a pet animal. We all love dogs, and we all love puppies. Okay, so start a kit. Do you have a pet? Take the time your pet will need. Take the things your pet will need. So your do you have a pet? All, some may have, some may not. किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा. Okay, so your things that dog need is food. Okay, they need playtime. Yes, they need water, and they need a place to sleep. Sorry. Okay, what would you do for your dog if you had to go away for a few days? What will you do? यदि आपको कहीं जाना है थोड़े दिन के लिए, what will you do for your dog? You will arrange someone so that he or she can give attention to your dog, take for a walk, give the dog food proper time and take care of that. Yes, यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप देखोगे कि डॉग को कोई देख ले, थोड़े दिन उसको खाना टाइम पे दे, उसको घुमाकर टाइम पे लाए. ओके, और उसकी प्रॉपर केयर करे. ऐसा ना हो वो रख तो ले सामने वाला बट उसको मारे या मतलब कुछ भी ऐसा अनहैप्पी सा कुछ करे, है ना. हम ऐसा जाने के पहले हम किसी को ढूंढेंगे जो हमारा डॉग रख ले. इफ़ नॉट पॉसिबल हमारे कोई फैमिली का पर्सन को रुकना भी पड़ता है. अच्छा, इज़ लाइक दैट कि हम सब जा रहे हैं बट डॉग की केयर करने के लिए हमें कोई मिलता नहीं है. सो वी जस्ट वन पर्सन हैज़ टू वेट फॉर दैट. ओके, किसी एक को रुकना भी पड़ता है. ओके, सो लेट्स नाउ रीड द पोएम. ओके, सो दे बॉट यू and kept you in a very good home, air conditioner, TV, a deep freeze, a very good home, no one to take you for the lovely long run. Okay, so in the first stanza it is given there, they bought a dog. वो dog like they bought a dog and they kept in their very air conditioner room. Okay, there was TV also and a deep freeze. उनके पास TV भी था, air conditioner room था. They kept dog there. Okay, no one to take you for the lovely run. Okay, but there was no one who would take the dog for a long run, for a long walk, because dog loves to run. Okay, dog को पसंद होता है दौड़ना. Okay, so the person who bought the dog, they just kept him in their air conditioner room where there was TV and all the necessary things, but they don't take dog for run. Okay, for the lovely run, but otherwise a very good home. They feed you pollen chum, but not that lovely long run until mad with energy and boredom. Okay, so deep freeze means an electrical equipment which can you store food for a long time, means your refrigerator. Okay, Paul chum means name of two well-known pattern dog foods. Okay, they kept the dog in that room and they give the dog a very the lovely food that dog. Paul chum is the food that dog eat, a well-known food that dog eat. They gave the dog that food also. Okay, until mad with energy and boredom. Your escape and ran and ran and ran. Okay, the dog was mad because they were not taking the dog for a long run. वो डॉग को खाना वगैरह सब दे रहे थे, जो डॉग खाना खाता है अच्छा क्वालिटी वाला. बट वो डॉग को जो था वो डॉग को बाहर घुमाने नहीं ले जा रहे थे. ओके, एंड डॉग वॉज बोर्ड. ओके, द डॉग एस्केप्ड. वो डॉग कैसे तैसे एस्केप करता है एंड रैन और वो दौड़ने लगता है. ओके, अंडर अ कार टुडे दे विल क्राई फॉर यू. ओके, जो डॉग, जब यू कैन सी इन द पिक्चर, जब डॉग भागता है खुद को छुड़ा के उनसे, सो द डॉग केम अंडर अ कार, वो कार के नीचे आ जाता है. टुडे दे विल क्राई फॉर यू,
जो whomsoever was keeping the dog, whomsoever was मतलब जो भी उस डॉग को रख रहा था, दैट पर्सन विल क्राई फॉर टुडे. ओके, वो आज रोएगा. टुमारो दे विल बाय अनदर डॉग, कल वो दूसरा डॉग खरीद के ले आएंगे. ओके, so this was the poem. In that poem they shared something about dog. Okay, something for dog lovers. Okay, you know dog lover means जिनको डॉग रखने का मतलब किसी को डॉग रखने का दे हैव लव अगेंस्ट देम, सो दे कीप द डॉग, they just provide care, they just provide the healthy environment to them. Okay, but some are like they just keep the dog but they don't pay attention towards the dog, they don't take care. मतलब वो रख तो लेते हैं बट उनको इतना केयर नहीं देते. Okay, so dog always need care फ्रॉम अस साइड. हम जब डॉग रखते हैं डॉग हमसे केयर भी मांगते हैं. येस, एंड दे डू ऑल्सो केयर फॉर अस. वो हमारी भी हेल्प करते हैं और वो हमें भी एक तरीके से जो भी रिस्क रहता है उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. लाइक वी हैव अ रिस्क फ्रॉम थेफ्ट एंड ऑल. जो हमारे घर में वो चोरों को घुसने नहीं देते. जे जस्ट बार्क्ड व्हेन सम न्यू पीपल केम टू हम. हमारे घर पे जब कोई आता है दे जस्ट स्टार्ट बार्किंग. So this was the poem. In that they shared the dog story in which the dog was bored because he was kept in a very air conditioner room, but he was given the dog was given the good food also, but they was not taking the dog to run for a walk. When the dog escaped from the house, the dog came under a car. जब वो भागा वहाँ से वो dog एक कार के नीचे आ गया. नाउ व्हाट द डॉग सेड, दैट डॉग बताता है ऐसा कि मतलब टुडे यू विल क्राई फॉर द डॉग, टुडे आप उस डॉग के लिए रोगे बट द नेक्स्ट डे यू विल बाय अनदर डॉग, दूसरे दिन आप दूसरा डॉग ले आओगे. ओके, सो दिस वॉज द पोएम एंड दिस पोएम वॉज रिटन बाय स्पार्क मिलगिम. ओके, सो काइंडली नोट द पोएट्स. ओके, दिस आई विल गिव यू अ क्वेश्चन अबाउट इट. द पोएट ऑफ डॉग lover is Spike Milligan. Okay, just read the poem and do the exercises. Okay, thank you children.